Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Richa Mundhra for all those who are new here, and right now I am in Calcutta. I am here for my wedding shopping, so I'll not be showing you a lot of shopping, but I'm here for my wedding shopping, and yep, you will see a lot of family meetings, a lot of eating, a lot of shopping areas, and a lot of like exploring in this vlog. So stay tuned, and in the last I might tell you from what all places I did shop. So yeah, stay tuned for that. Into the streets of बड़ा बाजार. ये वाला रिक्शा यार यहीं पे मिलता है अभी भी ये रिक्शा, but this rickshaw is still there. Damn it. So क्या बोलते हैं इसको? Crush यार. but ठीक है. Let's hope we get something. The next day. Today's shopping is at Elgin Road. It looks really fancy. हम मलमल गए, which is completely cotton. Then we went to Onaya, which is out of our औकात. मसाबा में तो wedding collection मिलेगा नहीं. And now let's go to Vidhatas, followed by Stavi. But you know what? I'm more excited about going to Marbella's after whatever shopping we do is done. Let's go. Today is what, 27th. Let's go in. Good morning. I am starting my day with some coffee. Today is 1st of March. And this is coffee from Impulse Coffees. If you not watched the video, we'll link it. Mummy और मार रहे हैं. हम coffee पी रहे हैं and we'll go shopping. First time in life I made avocado toast. That's my masala. And some low fancy shit bread with coffee. Let's finish breakfast. Okay, it's today's shopping day. Salt Lake. Right now we are in front of Sunita. Rathi. अब हम जाएंगे ऐसे कुछ खाने यार. हम 4 घंटा से नहीं बैठे हुए. Let's go and eat. It's about 10 a.m. and we started for Raipur at about 5:45. Just having breakfast. I'm on Duranto. Look at the view. These are so pretty, yeah. But train journey sounds so fun. This is really pretty. That's my seat though. But my train khali hai. I just have breakfast now. A few moments later. I have just been sleeping. That's wow. Like that's legit wow. And now I'm sitting here for lunch and 2 घंटे में night हो जाएगा. Look at my eyes, just dehydrated. Sitting here. So this is lunch. I'll just show you. This is what the lunch is. This is what the view is. भी डाल दी दिन भर ये ले शक्कर चाहिए क्या तेरे को चाहिए कल खुद भी बोल रहे थे कि तू ऐसे बड़ी यूट्यूबर बन जाएगी और अब यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाओ तो फिर प्रॉब्लम होती है. पता कुछ नहीं देखो थोड़ी चाहिए शक्कर मेरे को नहीं चाहिए शक्कर. मेरे कॉफ़ी तैयार है. तो मम्मी चाय के पैकेट चोरी करते हुए. कैसी रही मम्मी आपकी ट्रेन की जर्नी? अच्छी रही. कितना सोया आप? सोई बातें की पंचायती के तुम भी. कचौड़ी एंजॉय कर रायपुर आने वाला. And we have finally reached Raipur. Like I can see the station right here. So I will see you with some wedding tips in like 5, 4, 3, 2, 1. Hey everyone, so as promised I am back and this is
so many days after, I can't even tell you. I had zero motivation to shoot, okay, like zero motivation. YouTube videos बनाने में मुझे फिर भी मज़ा आता है because there's vlogs and all of these elements that goes into it. But Instagram में तो बनाने में मुझे ज़ीरो मज़ा आ रहा है. But as promised, I am here to talk to you about some wedding tips that I used in Calcutta and that I learned from my mistakes and that should be useful to you. Okay, in no particular order. Tip number 1, always do your Instagram, Google review results, search that you want to go. Okay, तो अगर तुम्हारे दिमाग में 2-3 ऑप्शंस है कि तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए और कौन कौन सी शॉप्स तुमने शॉर्ट लिस्ट करी है, प्लीज़ उन शॉप्स की कलेक्शन को सर्च कर लेना. हमारे साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ हुई थी कि वेडिंग सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ था और होली के बाद स्टॉक चेंज होता है, होली के पहले स्टॉक चेंज नहीं होता है. तो उस केस में ना हम जब गए तो बहुत सारी जगह में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया कुछ चीज़ लेने में, राइट. दैट इज़ टिप नंबर 1. सेकेंड, डिसाइड योर बजट. तुम जो बजट डिसाइड करोगे, तुम जिस डिज़ाइनर के पास जाओगे, सबसे पहले चीज़ उन लोग ये पूछते हैं, डिसाइड योर बजट. लाइक वट एवर इज़ योर बजट, ओके, वट एवर इट इज़, 10K, 50K, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, वट एवर इट इज़, डिसाइड योर बजट, स्टिक टू इट, ट्राई बार्गेनिंग. बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती नहीं है बट फिर भी देर इज़ लाइक स्कोप फॉर सम बार्गेनिंग, सो ट्राई बार्गेनिंग, डू नॉट फॉरगेट बार्गेनिंग, ठीक है. थर्ड थिंग, जो तुम शॉप्स में जा रहे हो, उन शॉप्स में जाने से पहले वहाँ का अपॉइंटमेंट ले लो. सारी शॉप्स बिकॉज ऑफ कोविड, मोस्ट ऑफ द बुटीक्स, जो होलसेल वाली शॉप्स है वो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द बुटीक्स हैव बिकम अपॉइंटमेंट प्लेसेस नाउ. सो इफ़ यू आर गोइंग, एंड दिस इज़ कैलकटा स्पेसिफिक, ठीक है, आई हैव नॉट शॉप्ड एनीवेयर एल्स, सो दिस इज़ कम्प्लीटली कैलकटा स्पेसिफिक. So in case you are shopping from Calcutta, or there might be chances कि ये दिल्ली वगैरह में भी हो गया हो, दिल्ली, मुंबई, etc. So if you're shopping from there, make sure you have an appointment or just ask them if they have appointments or not, right? So that your time does not get wasted. Okay, fourth thing, segregate your distances and the shops that you want to go. Like for example, अगर आज तुम्हें सिटी के दूसरी तरफ जाना है या सिटी के एक्स एरिया में जाना है, उस एक्स एरिया में जितनी शॉप्स है, जो तुम्हें पता है, जो तुमने रिसर्च किया है, सारी शॉप्स का नाम लिख के रखो, डिस्टेंस वाइज उन्हें सेग्रीगेट करके रखो ताकि तुम चलो ज़्यादा और गाड़ी तुम्हें यूज़ करना कम पड़े, क्योंकि वन वे होता है, ट्रैफिक होता है, ये सब में तुम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या शॉपिंग के समय तुम सिर्फ शॉपिंग करना चाहते हो, राइट. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कि ऑलवेज हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट एंड देन गो. अगर तुम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो देयर इज़ अ चांस कि तुम्हें लंच वंच के समय भूख नहीं लगेगी. आप अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग टाइम पे चाय वाय स्नैक्स वगैरह सारे शॉप्स वाले दे देते हैं इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम देम. बट अगर तुम लंच करके नहीं निकलते हो तो यू विल वेस्ट अगेन सम टाइम इन गेटिंग लंच एंड एवरीथिंग. सो इट्स बेटर 10-10:30 के अराउंड मस्त बहुत सारा हैवी खाना खाओ और फिर निकलो. एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर कि अगर तुम्हारा वेडिंग लहंगा है या तुम्हारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस वाला लहंगा है, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 weeks टू गेट डन. एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द फर्स्ट फिटिंग, और उसके बाद उन लोग उस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं. सो यू शुड हैव टाइम if you are getting custom made lehengas or customized lehengas. If you're going for a ready made और तुम्हारा body structure is the regular body structure, I don't want to say it like that but that's how it is, कि जो already available है, हल्की सी fittings करने में हो जाएगा, good to go. But इफ़ यू आर ऑफ द बॉडी टाइप जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, या तुम्हें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है, यू वांट योर लहंगा टू बी अ सर्टन टाइप, you want your dresses to be a certain type, please ensure you have time in your hands and do not keep shopping as the last element. Yeah, I think that's all that I have. इतना ज्ञान है. इतनी सर्दी, मम्मी इतना डांटती है ना when I do on the camera, but don't have a choice.
सर्दी है. Yep, that's it for the gyan that I have. I'm still shopping. My shopping is still not complete. So if you have tips for me, do let me know in the comments below. Leave me like some trousseau tips as well, like what do I buy, where do I buy it from, and what should be like a definite entry into my trousseau. I know about makeup, but makeup ke alawa or kya it should be a definite entry into the trousseau. And I'll see you in the next video. Bye.